कह रहा हूँ फवाद सर आगे है शायद, उनको को होस्ट बना दो। Hey everyone, we are here in Singapore for the Token 249 event, which is one of the biggest crypto summit in the history of crypto. We are here to celebrate our M20 blockchain. If you just look around the room, you'll feel the energy. It's just amazing being here around all these big companies in crypto, in blockchain. We're having so many attendees asking questions about our blockchain, our future ecosystem, our metaverse. There is like whole Web3 world here. People came here to support us, and I'm so happy to see our strong community. I really want to say thank you so much to whole M20 community. We had an amazing event, an amazing last 2 days. We met so many people around the world. We met a lot of companies, we met a lot of exchanges. We did a collaboration with the biggest partners. So दोस्तों just अभी beginning है. We have set a futuristic base to go in a direction that nobody can imagine. Hoping that we are going to give the best of what we can do to build a great ecosystem for M20. You will see a lot of upcoming dApp projects coming on our blockchain, and we are going to win together. M-Coin, M20 chain, it's just going all the way up, and you have to be a part of it. Thank you all for being part of this, and hope to get in touch with you soon. Sending you so much love.
Hi, good evening, everyone. Good afternoon, wherever you are. I would like to start by saying hello, namaste, assalamu alaikum, sat sri akal. Whoever's listening to this call, I welcome you on this call. Thank you so much for being on this call with us. Today's call is going to be very, very important call. And, I'm so grateful for the CEO of our project, Mr. Denise, for being on the call with us. And I really truly appreciate your time and effort that you're going to put in this project and your time with us. It's a second Saturday. You're giving us a very good time. You're very valuable time. Every time you come on the call, we learn so much from you. So thank you so much for being on the call. I hope you can hear me loud and clear, Mrs. Denise. Yes, sir. I hope you can hear me Perfect. too. Thank you. ओके सो सभी दोस्तों को इस कॉल पे वेलकम कहते हैं जो जो भी लोग इस कॉल पे जुड़े जहां जहां से भी जुड़े हैं हम सब आप सबको वेलकम कहते हैं थैंक यू सो मच आप इस कॉल पे आए आज आप इस कॉल पे जुड़े और इस कॉल को हम आगे लेके चलते हैं और मिस दनीश का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो दूसरा वीक कंसेक्यूटिव हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ और बहुत ही अच्छी अच्छी न्यूज़ हमारे लिए हैं जो कि अब वो हमारे साथ शेयर करेंगे और जैसा कि लास्ट वीक कॉल में सभी को बताया गया था कि इस वीक में जो एक रोड मैप जो एक डिटेल वर्जन रहने वाला जो हमारा जो मेटावर्स प्रोजेक्ट है उसको लेके एक डिटेल वर्जन है उसके ऊपर आज बात की जाएगी तो सभी से गुजारिश करूंगा कि अगला 1 घंटा आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है तो प्लीज़ इसके ऊपर फोकस कीजिएगा और किसी भी किस्म की डिस्टरबेंस ना हो आपको और इस पे पूरा फोकस कीजिए आज की कॉल लाइव है यूट्यूब के ऊपर फेसबुक के ऊपर और आप सबसे गुजारिश है कि जो लोग इस कॉल पे जुड़ना नहीं पा रहे जूम लिंक के थ्रू तो प्लीज़ आप यूट्यूब के थ्रू या फेसबुक के थ्रू इसके ऊपर आप जुड़ सकते हैं और इसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसी तरीके से मैं इसको इंग्लिश में एक दफ़ा ट्रांसलेट करूँगा For those of you who are not getting onto this call through a Zoom link, or if you're trying to join this call but you cannot join, maybe your team cannot join, you can always go to the YouTube link, which is already been shared with everyone. So please do join through a YouTube link or even a Facebook. This call is live on YouTube and Facebook, so you can always join us on those social platform. So without further delay, I'm going to invite our first guest speaker. She is someone that I have a very, very huge respect. She was with us on our last call. And again, I'm very grateful. She's also available for us today. Someone that I have a huge respect, a great, great lady. She's working very hard with us all over Europe. We've been traveling. So I want to hear, before we go to our CEO, I want to hear from her
please share her experience and her goals, what she's looking to do in next coming months with this exciting metaverse project. अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूं एक ऐसी लेडी को जो कि यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ा मोमेंटम क्रिएट कर चुकी हैं, और हम उनसे सुनते हैं कि उनका गोल अगले कुछ चंद माह में क्या गोल हैं और वो किस तरीके से मेटावर्स प्रोजेक्ट को देख रही हैं और किस तरीके से इसको बिल्ड करेंगी. सो विदाउट फर्दर डिले, I would like to call our one of the top leaders from Europe, Miss Elena. Could you please unmute yourself and please share some words with us? Hi everyone, hope you are doing well. I'm very happy to be on this call. So my name is Elena Kenji. I am right now working very hard in order to develop the project in all Europe. And a few days ago, I had a chance to have beside me Mr. Dennis and Mr. Fawad. We went to different cities, and right now I am traveling again in order to expand the project in all Europe. And we are just about to have a new token in a few hours, and we are so excited. And you know what? A lot of people right now are just buying M coins because we all know that this new token will arrive in a few hours, and we won't be able to buy the M coins anymore through our platform. So we are not stopping working right now, and yeah, we are very excited about regarding this new token. So on Monday, I suppose we will have I think the founder of the company will make an announcement. So we all will have information today. So I still don't know, but I'm sure that it will happen very soon. So this new token is just a meteorized token. So it's a huge project. So everyone in Europe, we are waiting for this new token. And also we are working on developing a new continent, African continent. Also in a few weeks, just after token 2049, we will travel to Africa in order to develop this project there as well. So just to let you know that here in Europe, we are just looking at what you did in India, what you're doing in India. You're just an inspiration for us here. We're following you on social media, and yeah, we just can't wait to meet you guys in token 2409. Bye-bye. Thank you so much, Elena. I think always it's great to hear from you. The energy that you have is really unmatching, and thank you so much for sharing your experience with us. I will quickly translate to what you just said for all of our listeners who are listening us in a majority of them in Asia. So I will try to translate so everyone knows that what's being said. So जैसा कि दोस्तों आप सभी ने सुना कि मिस एलिना ने हमसे शेयर किया कि पिछले कुछ वीक्स में, कुछ हफ्तों में मैं और हमारे सीईओ मिस्टर डेनिस हम यूरोप ट्रैवल कर रहे थे, और उनका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम सब के साथ मिलने का और इकट्ठे काम करने का, और डिफरेंट सिटीज में जाके जहां जहां हमने अपने इवेंट्स किए थे आज से 2 वीक पहले, आज से मिस एलिना दोबारा उन सिटीज में जाके वहां पे इवेंट कर रही हैं, और वो यही बता रही हैं कि वो बहुत एक्साइटेड हैं हमारे नए प्रोजेक्ट को लेके, और जिससे भी वो डिस्कस कर रही हैं सब लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है ना सिर्फ यूरोपियन मार्केट के लिए बल्कि वर्ल्ड वाइड के लिए. सो आई थिंक ये एक बहुत ही ग्रेट न्यूज़ जो इन्होंने शेयर की, और इसी के साथ उन्होंने बताया कि हम एक नया कॉन्टिनेंट जो है वो बिल्ड कर रहे हैं, और ऑफिशियली इसको हम टोकन 2049 के बाद ट्रैवल भी करेंगे अफ्रीका के अंदर. और जिस तरीके से आप लोगों ने इंडिया में इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड किया, आप हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है जो हमें मोटिवेट करता है यूरोप और अफ्रीका को बिल्ड करने में. तो ये बहुत एक्साइटेड है, और आप सबसे मिलने के लिए भी एक्साइटेड हैं टोकन 2049 के लिए. थैंक यू सो मच Elena. Thank you. You've been a very inspiration not just for
for the networking, but also for the corporate team, the way you work. You are a one-woman army, so we're so lucky to have you on board with us. Thank you so much. अब मैं जिस शख्स को इनवाइट करने जा रहा हूं डिले के बगैर, आप सभी उनको जानते हैं, आप सब उनसे मिल चुके हैं, और ऐसा एक इंसान जो पूरा इस माइंडसेट है ना सिर्फ मेटावर्स के ऊपर बल्कि एम कॉइन, मीथर, इकोसिस्टम, जो भी आज आप अपने सामने प्रोजेक्ट देख रहे हैं, उसके पीछे जो एक ब्रेन है या जो प्रॉपर माइंड है, वो आज हमारे साथ हैं। तो आई थिंक इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, ये अच्छा है कि हम उनको बुलाएं और उनसे सुने कि उनके पास हमारे लिए आज एक्साइटिंग न्यूज़ क्या हैं। जो लास्ट वीक, जैसा कि प्रॉमिस किया गया था आपसे, कि इस वीक आपको डिटेल वर्जन बताया जाएगा कि ये प्रोजेक्ट क्या है और किस तरीके से हम इसको एज अ टीम लॉन्च भी करेंगे और एज अ कंपनी इसको ग्रो भी करेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले, नाउ आई एम गोइंग टू इनवाइट the brain behind not just on metaverse or meta arise, also the person who is behind Mether, the main brain behind the whole mcoin and ecosystem. And we always get a good chance to learn from him, someone who I look up to, even though he's quite younger than me. And I'm so excited to work with you. So without further delay, I want you to please, quickly dive into this and give us all the exciting news that we've been waiting for. So I hand over to our proud CEO of Metha and M20, Mr. Denisha. Welcome, sir. Great. Thank you. Thank you, everyone. I hope you can hear and see me clearly. Loud and clear. Great. And my screen is also sharing perfectly to you guys, I think, because we have amazing informations right now. And quickly, introduction, as Mr. Fawad always introduced me, very, very lovely. I appreciate that. My name is Dennis Sheo, CEO and founder of this big project in the Web3 space. And in the next minutes, next 20, 30, 40 minutes, I'm going to share deeper information into our latest and biggest project within our ecosystem. Sure. Thank you so much, Mr. Fawad. आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, और आज की कॉल एक बहुत ही डिटेल कॉल होगी क्योंकि हम एक डीप डाइव करेंगे, हम एक डिटेल वर्जन आपके सामने रखेंगे कि मेटावर्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं और हम क्या करने जा रहे हैं। And before I'm gonna dive into the metaverse of our ecosystem, in business, it is very, very important to have the perfect timing. And ladies and gentlemen, for everyone who is in the Web3 space, right now is the perfect timing. We have token 2049 upcoming within 2 weeks, less than 2 weeks. We have the Bitcoin halving. The market is hyped up about this event. We have from the past token 2049 in Singapore, major announcements with publishers in the media out there. So great news, the perfect timing to do something very big in this industry. जो लोग भी आज इस कॉल पे हैं, आप सब लोग बहुत ही लकी हैं। जो लोग भी मेटावर्स के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं या होने जा रहे हैं, आप सब बहुत लकी हैं कि टाइमिंग, जो बिजनेस के अंदर एक हम बात करते हैं टाइमिंग, वो आपकी फेवर में है। वो इसलिए आपकी फेवर में है कि जो नैरेटिव जिसके ऊपर हम बहुत बात करते हैं, जो ट्रेंड हम बोलेंगे, वो इस टाइम पे मेटावर्स का है। और हम बिल्कुल अलाइन है, 2-4 चीजें अलाइन। एक, टोकन 2049 जो कि अब से रफली 2 वीक दूर है। दूसरा, हमारा बिटकॉइन हैविंग जो कि अब बिल्कुल 8 से 10 दिन दूर है। उसके साथ जो एक बड़ा जो ट्रेंड है, जो लोगों का रुझान, जो लोगों की अट्रैक्शन है मेटावर्स को लेके, वो सारी ही इस इंडस्ट्री के ऊपर है। तो आई थिंक टाइमिंग आप सबकी और हम सबकी फेवर में है। Great. So let me jump deeper into the topic. As I explained in the call a week ago, this is our major focus in the next couple months this year and in the next years within our ecosystem, our own metaverse called Metavers.
and what you will be able to do within this metaverse, what you be able to do with the project itself, and how it will be an impact in the Web3 space. I'm going to explain you in the next part. जैसा कि लास्ट कॉल पे हमने आपसे शेयर किया था, जो हमारा मेटावर्स का प्रोजेक्ट है, ये हमारे इकोसिस्टम का ही एक हिस्सा है। जैसा आप इकोसिस्टम में बाकी प्रोडक्ट्स को देखते हैं, जैसे एम कॉइन है, M20 ब्लॉकचेन है, ट्रेडबिट है, NFTs हैं, इसी तरीके से ये मेटाराइज हमारे इकोसिस्टम का एक पार्ट है। और हम आज आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इस इकोसिस्टम का हम सबको क्या फायदा होने वाला है। And you know, there is a story, but not only just a story, it is a fact in the market. If you go outside and look for the major big companies outside of Web3, you see a big company called Facebook. Back then, they are now Meta. So if you just take a minute and think about it, a major company in the industry changed the whole company, not only the company name, the whole structure to Meta. If you go on WhatsApp, it's Meta. If you go on Instagram, it's Meta. So I think, and not only myself, a lot of experts in the industry think something big is coming, a big wave, a big change is coming in the industry, not only from the Web3 space, but from the whole digital industry and from the whole Web2 and Web3 industry. अगर हम आज देखें कि मेटावर्स की एग्जिस्टेंस क्या है, मेटावर्स रियलिटी है कि नहीं है, तो इसकी एग्जाम्पल हमें बहुत करीब से मिलेगी कि दुनिया का सबसे बड़ा सोशल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है फेसबुक, उसने अपना नाम मेटा रख दिया है। और ये आज नहीं, ये पिछले साल से उन्होंने अपना जो है पिछले कई सालों से चेंज किया फेसबुक से मेटा। अगर आप व्हाट्सएप पे जाएंगे तो आपको नीचे आएगा पावर्ड बाय मेटा, इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो आपको नजर आएगा पावर्ड बाय मेटा। तो ये एक सिग्नल आप सबके लिए, हम सब के लिए है कि एक इतना बड़ा नैरेटिव जो कि चेंज होने जा रहा है, कि इतना बड़ा नैरेटिव क्रिप्टो को लेके, मेटावर्स की इंडस्ट्री को लेके, कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपके सामने आ रहा है और दुनिया इसको ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुकी है। सो आई थिंक ये एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है वंस अगेन आप सबके लिए कि दुनिया अब इस तरफ शिफ्ट होने जा रही है। And this major update, as I showed you the example, Facebook called Meta now, happened almost 2 years ago. And the great news is when this happened in the industry, we searched for the best developers, for the best team in that sector, because don't forget, Metaverse is something that is happening behind the scenes for the past 4 to 5 years and a little bit further than that. But since the big major change, we are developing our metaverse since 1.5 years, as I told you, 18 months. And it is here, it is ready to use, and I'm gonna dive deep into the topic. और इसी के साथ जो मेटावर्स का ट्रेंड है वो कोई नया ट्रेंड नहीं है, ये पिछले 4 से 5 साल का जो ट्रेंड है वो चलता आ रहा है। हाँ, अब आकर पिछले साल से इसके अंदर एक बहुत बड़ी मूवमेंट चली, इसीलिए हम पिछले 1.5 साल से सबसे पहले तो एक अच्छे डेवलपर्स की तलाश में थे, एक अच्छी टीम जो कि इसको डेवलप कर सके, क्योंकि देखिए ये एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है। तो आप समझेंगे कि अगर नई टेक्नोलॉजी है तो इसके लिए आपको एक नए अच्छे डेवलपर्स की जरूरत रहेगी जो कि प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना पाए। तो इसीलिए हमारी जो टीम है, जो डेवलपमेंट टीम, वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट टीम है। And now what's the mission of Metarise? The mission is very simple. The mission is to combine the current Web2 world, the current real life world, with the future called Web3. And this is possible with something like Metaverse, where you can have your real life assets tokenized and on your blockchain called
in our case, M20 blockchain, and you can have your real life assets in this world. So the mission is to combine these two worlds together and give people the possibility to connect all over the world, to have everything what they have in real life in the metaverse, and to use it also not only for a normal customer, there are also possibilities for businesses and brands, but I'm going to explain it, as I told you, more in detail. अच्छा, अगर मेटावर्स की बात करें तो हमारा मिशन क्या है कि वेब 2 को वेब 3 के अंदर एक ऐसा ब्रिज बिल्ड करना जो ऐसी ट्रांजिशन रहने वाली है, जो कि एक स्मूथ और इजी ट्रांजिशन रहेगी। हमारा जो मेन एम गोल ये है कि हमने एक दरमियान का पिलर बनना है या ब्रिज बनना है जो दोनों इंडस्ट्रीज को जोड़ेगा, जो वेब 2 को वेब 3 के साथ कंपाइल करेगा और आप सबके लिए एक ऐसा सस्टेनेबल प्लेटफॉर्म रहेगा जो कि आने वाले फ्यूचर्स में हम एक बड़ी मेटावर्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं, मेटावर्स की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि इसमें काम ऑलरेडी कर चुकी हैं या कर रही हैं, जिसमें से विक्टोरिया वीआर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मेटावर्स को लेके। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को अगर हम compete करना चाहेंगे तो हमारे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारी टीम्स और हमारा विजन बिल्कुल क्लियर हो, जो कि मीथर में मेटाराइज में हमारा विजन यही है कि हम इसको एक ब्रिज को सक्सेसफुल कर पाए। And to give you one last example before diving deep into the topics, one real life example, just remember how Snapchat, TikTok, and Instagram, for example, changed our way of living, where you could share real life and live your own private life, your own experience with the world online. And now this is the next step in industry like that, where you can share your real personal life with people all over the world, can connect together. And let's say, for example, back in COVID, everyone was on Zoom like we are right now, but these things we can have in the metaverse more personally and more advanced. अगर आप इसकी एक एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं तो इसकी एग्जाम्पल बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि जैसे कोविड के अंदर मोस्टली सब भी बिजनेस बंद हो चुके थे और लोग क्या कर रहे थे कि जूम के ऊपर बिजनेस बिल्ड कर रहे थे। और आई थिंक कोविड ने हम सबको एक चीज ये बता दी कि आप घर से बैठकर भी काम कर सकते हैं, घर से बैठकर भी लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप एग्जाम्पल लें टिकटॉक की, स्नैपचैट की, टिकटॉक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम ने जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल बदल के रख दिया कि लोग अपनी अपनी जो पर्सनल चीजें थे वो सोशल मीडिया पे शेयर करना स्टार्ट हो गए, लोगों को बताना स्टार्ट हो गए। जो दूरियां थी वो बिल्कुल पास आ गई। तो ये बिल्कुल एक स्टेप 1, ये फेज 1 का जो है ये एग्जांपल है। अब मेटावर्स के अंदर आप वो ही काम एक नेक्स्ट लेवल पे कर पाएंगे। जब मेटावर्स के अंदर आप होंगे यही एक रियलिटी होगी जो आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल होगी, क्योंकि ये नई रहेगी, क्योंकि ये नई इंडस्ट्री है, नई टेक्नोलॉजी है। इसके लिए हमें शुरू के अंदर थोड़ा सा इसके अंदर दिमाग लगाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। उसके बाद हमारे लिए ये ऐसे ही नॉर्मल हो जाएगी जैसे बिटकॉइन आज नॉर्मल है, जो आज से 10 साल पहले किसी को समझ नहीं आता था। यस। So, ladies and gentlemen, this is the Metavers world. I'm going to explain you in detail how it is split up. It will be split up in two major areas. The one is Cityland, the other one is Funland. In Cityland, more corporate stuff is happening. You can have your offices, you can have your meetings, and so on. In Funland, the name itself says you can have fun. You will have arenas, expos, live concerts, DJs, you can play cricket and all that stuff. So this is the major difference between these two lands, and I'm going to explain you each area in detail now. अब ये जो मेटावर्स है, जो हमारा मेटाराइज के नाम से मेटाराइज वर्ल्ड, इसके अंदर दो साइड्स आपको देखने को मिलेंगी। एक मिलेगा आपको फनलैंड, जो कि नाम से ही आप समझ सकते हैं कि फनलैंड में आपके लिए गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, जिम हैं, कुछ भी ऐसी फैसिलिटीज जो कि फन रिलेटेड होंगी वो फनलैंड में होंगी। और जो दूसरी साइड रहेगी
वो ये रहेगी कॉर्पोरेट रिलेटेड। वहां पे आपको शॉप्स भी मिलेंगी, मॉल्स मिलेंगे, घर मिलेंगे, और इसी के साथ साथ आपको ऑफिसेज मिलेंगे, बिल्डिंग्स मिलेंगी। तो जैसे कि रियलिटी में अगर आप कहीं पे भी रह रहे हैं तो वहां पे आपको दो किस्म की चीजें मिलेंगी। आपको एक रहने के लिए सोसाइटी, रहने के लिए घर और शॉपिंग मॉल, और इसी के साथ साथ ऑफिसेज मिलेंगे। और फनलैंड की क्या है कि फनलैंड के अंदर आपके लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड रहेंगे, जिम फैसिलिटीज रहेंगी, और इसी के साथ साथ ये सारी चीजें को अगर हम कंबाइन करें तो वो बनता है मेटा अराइज वर्ल्ड। The heartbeat of a new world, it says in the slide, the center of the Metaverse world will be the Metaverse tower. Just take an example, like in every big city, there is a major point where everything is controlled and where you can access different services from your local government or whoever it is in the city. Here in the Metaverse, it is almost the same. The Metavers tower will be the heart, the center of the world. You can come, you will have offices, and the major things are happening in this place. अगर हम देखें किसी भी बड़ी सिटी में, किसी भी बड़े शहर में, अगर आप अपनी ही सिटी में देख लें तो आपकी सिटी में भी कोई ऐसा मेन्यूमेंटल, कोई ऐसी बिल्डिंग, कोई ऐसी जगह कि जहां पे, जिसको हम बोलेंगे हार्ट, दिल, आपका जो उस शहर का जो दिल है, या जो हम कहेंगे कि मीटिंग पॉइंट, अगर सही शब्दों में बोलूं तो मीटिंग पॉइंट, जहां पे लोग आके मिलेंगे, लोग आके इकट्ठे होते हैं। जैसा कि क्योंकि मैं दुबई में रहता हूं तो मैं बोलूंगा बुर्ज खलीफा। ये बुर्ज खलीफा एक सेंटर है कि दुबई का। क्या अगर आपने किसी को भी सेंटर में मिलना है तो आप उसको बुर्ज खलीफा का बताएंगे। इसी तरीके से हर सिटी के अंदर, दुनिया में हर शहर के अंदर, अगर हम लंदन की बात करें तो लंदन में रहेगा टावर ब्रिज या लंदन ब्रिज, अगर आप, ये है सेंटर। ठीक है, अगर हम फ्रांस की बात करें तो उसमें हम बोलेंगे एफिल टावर, जो कि है फ्रांस का जो 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 सेंटर। तो इसी तरीके से आपके सिटी में, आपकी शहर में एक ऐसा मोन्यूमेंटल या ऐसा टावर या ऐसी बिल्डिंग जो कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगी, उसी तरीके से मेटा अराइज के अंदर जो कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बोल लीजिए या जो मेन मीटिंग हब, मीटिंग पॉइंट बोल लीजिए, वो है मेटा अराइज टावर। Great example, Mr. Fawad. Thank you. Dubai is a very, very good example to showcase this metaverse world. And like you know it from your cities, from international cities, the same infrastructure will also be in our metaverse. Like in Cityland, as I said, you will have shopping malls, you will have business offices where you can go inside and work, have your Zoom sessions like now, have your video calls, record videos. You will have virtual showrooms like car showrooms. You will have real estate buildings where you can go inside and purchase real estate properties and art galleries and many, many more things in the future. But this is the city land, the more corporate side of this metaverse. अच्छा, अगर हम सिटी लैंड की अब बात करें कि सिटी लैंड में हमारे पास क्या रहने वाला है, हमारे पास क्या ऑप्शंस रहने वाली हैं, तो सबसे पहले तो वर्चुअल शॉप्स एंड मॉल्स। और ये आई थिंक लास्ट की जूम कॉल में भी शेयर की गई थी कुछ पिक्चर्स, जिसमें हमें फर्स्ट शुरू की कुछ जो पिक्चर्स थी, जो तस्वीर थी शुरू में कि दिखाई गई, कि जिसमें हमें शॉप्स नजर आई, मॉल्स नजर आए। इसी तरीके से पहले फेज के अंदर आपको बिजनेसेस, ऑफिस नजर आएंगे, वर्चुअल शोरूम्स, रियल स्टेट बिल्डिंग और आर्ट गैलरीज। तो आप दोबारा से समझिएगा, ये एक प्रॉपर दुनिया है जो इसको हम बोलते हैं मेटा अराइज वर्ल्ड। ये एक प्रॉपर दुनिया है। तो इसमें कुछ लोग आपसे पूछेंगे कि मैं क्या कर सकता हूं, तो उसका सिंपल आंसर ये है, जो कुछ भी आप प्लेनेट अर्थ या इस जमीन के ऊपर कर सकते हैं, वो आप जो मेटा अराइज वर्ल्ड रहने वाला है उसके अंदर कर पाएंगे। तो ये सब वो चीजें हैं जो सिटी लैंड के अंदर आप एक्सपेक्ट करेंगे और जो आपको मिलने वाली है। And the big difference in Funland, the name is fun. So everything that makes fun will happen in this land. And to give you a real life example, it is very, very
let's say, dead now, but back then the whole world used to do it. If you remember Nintendo Wii, there were so many games where you could play tennis, cricket, golf, boxing, and stuff like this. This will be able in Funland, everything that makes fun, you can do there. You can create your own club, cricket club, you can create your football club, basketball club, whatever it is, and make fun activities in this area. इसी के साथ जैसा कि पहले आपको बताया कि फनलैंड, और फनलैंड के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकेंगे कि फनलैंड के अंदर आप कोई भी स्पोर्ट्स स्टेडियम, कॉन्सर्ट जैसा कि आप देखते हैं, और एग्जीबिशन हॉल्स, अगर आप क्रिकेट ग्राउंड बिल्ड करना चाहेंगे, आपके पास ऑप्शन रहने वाली है कि आप वो भी कर सकेंगे। और इसी के साथ साथ बाकी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, फन को लेके, एक्साइटमेंट को लेके, वो सब आपको फनलैंड में मिलने वाली है। And why is it such a big thing? Why is Metaverse the future? Because within one platform, within one world, all the people out there can connect. You can see it here, normal users, normal customers, or gamers, people who really enjoy to play. You have creators like on social media who want to share their vision, their content, their influence, like influencers itself. Also, brands can share and sell whatever they want. And I will show you quickly here the major point for brands in the metaverse is you can connect with so many people on one platform. You can advertise whatever you want and everyone will see it like in the real world. If you go out in Dubai, you see billboards of everything. Same here for brands. Thank you. Can you go back on the previous slide, please? Okay, so अब मेटावर्स किसके लिए है, जो कि सबसे बड़ा क्वेश्चन, इसको हम बोलेंगे कि $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि ये मेटावर्स किसके यूज के लिए रहने वाला है। तो आई थिंक कोई भी इंसान इसको यूज करना चाहेगा वो यूज कर पाएंगे, चाहे वो यूजर्स हों, जैसा कि हम सब, आज आप भी, मैं भी, हम फेसबुक यूज करते हैं, हम टिकटॉक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो हम भी, हमारे पास ऑप्शन रहने वाली है कि हम मेटावर्स को यूज कर पाएं। प्लेयर्स जो कि खिलाड़ी हैं, जो किसी भी स्पोर्ट्स से ताल्लुक है, क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से, वो भी मेटावर्स यूज कर पाएंगे। क्रिएटर्स, जो कंटेंट क्रिएटर्स की बात करें, तो जो वीडियोस बनाएंगे फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, उनके पास भी एक्सेस रहने वाली है कि वो भी मेटावर्स से बेनिफिट उठा पाएंगे। और इसी के साथ इन्फ्लुएंसर्स, जैसा कि जो लोगों को फॉलो करते हैं, जो बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, जो लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, लोगों को गाइड करती है, जैसे हमारी सेलिब्रिटीज हैं, वो भी इससे फायदा उठा पाएंगे। और बड़े ब्रांड्स, जो भी बड़े ब्रांड्स हैं, सबसे बड़ा ब्रांड इस टाइम पे M20 है, आपको पता है, तो हमारे लिए, बाकी ब्रांड फ्रैंक मुलर के लिए, इसी तरीके से बाकी गुची, प्राडा, जो भी आप नाम लें, सभी ब्रांड्स हमारा प्लेटफॉर्म यूज कर पाएंगे और उनके पास ऑप्शन रहने वाला है कि वो कर पाएं। और इसी तरीके से अगर हम इसकी मेटाराइज की हम ब्रांडिंग देखें, तो हम किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो गेमिंग प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो जो है यूजर जनरेटेड प्लेटफॉर्म हो। तो कोई भी, हम ब्रांडिंग की बात करें, हम मार्केटिंग की बात करें, तो मेटावर्स सबके लिए, चाहे वो फर्स्ट टाइम यूजर हो, चाहे वो प्रो हो, सबके लिए एक्सेस है कि आप सब इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। For businesses, the great thing in the metaverse is, as I explained before, you can have your own office, you can have your own company property, you can have trainings in the office, whatever it is. And if you remember back, let's jump back in COVID in 2020, 2021, working from home was a big major thing in the industry. A lot of people are working from home. In the metaverse, you don't have to travel to your real office 2-3 hours. I think all the people in Dubai, in London, in big major cities internationally can relate the problem. Going to work, going back home takes several hours. In the metaverse, you open your computer, you open your device, jump in your office, have your sessions there, and
have your trainings there as a company, and many, many more activities as a business. इसी तरीके से अगर हम मेटावर्स के अंदर बिजनेस की बात करें तो हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। अब मैं इसमें एग्जांपल देता जाऊंगा कि शायद आप में से किसी को कॉन्सेप्ट हो वर्चुअल ऑफिस का। बहुत सारी कंपनीज ने दुबई के अंदर, यूरोप के अंदर अपने वर्चुअल ऑफिसेज, जो कि सिर्फ एक एड्रेस है, रियलिटी में वहां पे वो ना कोई ऑफिस है ना बिल्डिंग है, वो कंपनीज करती हैं, वर्चुअल ऑफिसेज रखती हैं। ये एक बड़ी ही अर्ली एग्जांपल है, बहुत अर्ली एग्जांपल, जिसमें हम बोलते हैं वर्चुअल ऑफिस। इसी तरीके से मेटावर्स के अंदर आप रियल टाइम वर्चुअल ऑफिस यूज कर पाएंगे कि जब आप मेटावर्स के अंदर एंट्री करेंगे आप अपना ऑफिस ले सकते हैं। आप अपने जितने बिजनेसेस डील्स हैं उसको अपने ऑफिसेज के अंदर कर सकते हैं। आप अपनी ट्रेनिंग्स कर सकते हैं। अगर आप पॉडकास्ट करते हैं तो पॉडकास्ट भी कर सकते हैं, प्रेजेंटेशंस, ट्रेनिंग, जो जो भी हम आज इस कॉल पे कर रहे हैं, हम यही आज से कुछ सालों बाद हम मेटावर्स के अंदर इसको लेके आएंगे और आप मेटावर्स के अंदर सभी एक ही रूम में होंगे जिसके अंदर हम ये प्रेजेंटेशन, ये ट्रेनिंग कर पाएंगे। और आई थिंक ये बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट स्टेप है बिजनेस को लेके मेटावर्स के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनीज, मैं इसमें एग्जांपल दूंगा। आप इमेजिन कीजिए कि अगर एक कंपनी ने मीटिंग करनी है यूएस के अंदर, तो वो पहले यहां से फ्लाइट लेंगे अपने, जो अब टाइम कंज्यूमिंग देखें, वो पहले फ्लाइट लेंगे, फिर 10 घंटे यहां से जाने में लगेंगे, वहां मीटिंग करेंगे और फिर वापस आएंगे। अब वर्चुअल या मेटावर्स के अंदर सिर्फ वो भी ग्लासेस पहनेंगे, ये भी ग्लासेस पहनेंगे, और वहां पे बैठ के आपको ऐसा ही फील होगा कि जैसे हम आमने सामने बात कर रहे हैं। और इस तरीके से हमारा जो टाइम कंज्यूमिंग है वो कंप्रेस होने वाला है, ताकि हम टाइम को शॉर्ट करेंगे और अपना काम आसानी से कर पाएंगे। And for users, everything what businesses, content creators, influencers offer, you can consume. So you can meet friends, go into co-working spaces like in your real life. You can go, a lot of people like to work in a Starbucks. You can also sit here in a coffee shop. You can work from there. You can meet people, you can network, get entertainment, go in cinemas and different events, like we say, DJ concerts. You can experience different kind of music tastes and different kind of entertainment events in the metaverse. So as a user, you can consume everything what is offered within the metaverse. और इसी तरीके से अगर आप जस्ट यूजर हैं, जैसा कि आप एक यूजर हैं मोबाइल फोन के, फेसबुक के या टिकटॉक के या इंस्टाग्राम के, तो आपके पास ऑप्शन रहने वाली है कि आप स्क्रॉल कर सकते हैं और कुछ भी वीडियोस, कुछ भी कंटेंट कंज्यूम देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मेटावर्स के अंदर भी यही ऑप्शन रहने वाली है आपके पास कि आप मेटावर्स के अंदर आप बैठ के सोशलाइज कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ, जो दूसरे लोग भी मेटावर्स के अंदर हैं। आप उनके साथ गेम्स खेल सकते हैं, आप उनके साथ कॉन्सर्ट्स पे जा सकते हैं, उनके साथ अपना आइडियाज शेयर कर सकते हैं। ये ऐसा ही है जैसा आप कॉफी शॉप में गए, स्टारबक्स में गए, किसी भी कॉफी शॉप में गए, आप बैठे, वहां पे दूसरे लोग भी थे, आपने उनसे बात की, आपने उनसे डिस्कशंस की, और फिर आप मिल के कहीं पे कॉन्सर्ट पे गए, म्यूजिक कॉन्सर्ट पे गए, या आप वहां से वापस आ गए। तो ये सब अवेलेबल है, जो भी रियलिटी में आज आप देख रहे हैं, ये सब अवेलेबल है आपको मेटावर्स के अंदर। So how can you be a part of this? How can you profit from this? The great start and the first way to be a part of the Metaverse is to get in the initial land offering. Initial land offering is the first movement. You can purchase your property within the Metaverse. 10,800 plots will be available. You can purchase it, and you can see on the slide 3 points of interest. That means, like in the real world, you can purchase the land, you can rent it, you can make money on your property, or if you wanna just let it there, the more community joins, the more people are interested in the metaverse, also the property will grow in value. So many opportunities that you can do, and also everything what we explained before, you can do on your own property. And this is only available if you get in the initial land offering and purchase your own property.
अब हम इससे फायदा कैसे उठा पाएंगे, ये आई थिंक एक $1 million क्वेश्चन वंस अगेन, कि हम इससे बेनिफिट जो जो भी डिस्कशन हमने पिछली स्लाइड्स में की, अब उसमें हमें क्या फायदा। आई एम श्योर आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें कहाँ बेनिफिट है, हमें कहाँ पे इसका एज रहने वाला है, हम कैसे बेनिफिट उठाएं। तो इसके अंदर सबसे पहले तो आप सबके लिए ग्रेट न्यूज ये है कि सबसे पहला जो स्टेप 1 है वो है ILO या इनिशियल लैंड ऑफर। इसकी एग्जांपल दूंगा आपको कि जो लोग भी रियल वर्ल्ड में प्रॉपर्टी बाय सेल करते हैं, और आई थिंक मेजॉरिटी लोग जो मेरी बात सुन रहे हैं वो सभी लोग लैंड बाय और सेल में बड़े ही इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि हम जो एशियंस हैं, हमारे लिए जो जमीन जो धरती है वो माँ के बराबर है। तो हम कोशिश करते हैं, हम जितनी भी चाहें कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा जमीन खरीदें, क्योंकि हमें यह पता है कि जमीन के अंदर जो है वो पावर है, जमीन के अंदर ग्रोथ है। इसी तरीके से जो अगर हम मेटावर्स की बात करें तो इसी के अंदर भी जो है लैंड ऑफर, जो इनिशियल लैंड ऑफर है, उसकी ऑप्शन अवेलेबल रहने वाली है आप सबके लिए। और इसके अंदर आपको 10,800 प्लॉट रहने वाले हैं, जो कि सबके जो कि आई थिंक अगर देखा जाए तो इतने ज्यादा प्लॉट्स नहीं है। तो आई थिंक ये तो स्टेट वे ही बिक जाएंगे जब इसकी ऑप्शन जो इसकी जो खुलेगी, जब इसकी सेल, तो ये स्टेट वे बिक जाने वाले हैं। और इसके 3 पॉइंट है जो आप सोचेंगे, आप इसको परचेज कर सकते हैं, आप इसको रेंट पे दे सकते हैं, आप इसको सेल कर सकते हैं। तो आई थिंक अगर आप ये समझिए कि आपने सिटी के पास या एयरपोर्ट के पास अगर आपकी जमीन आ गई, या अगर आपकी जमीन किसी बड़े शॉपिंग सेंटर या बड़ी बिजी रोड के पास आ गई, तो उसका क्या फायदा होने वाला है, उसका रेंट ऊपर जाएगा, जो कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे रहा हूं। मेटावर्स में भी यही एग्जांपल चलेंगी। अगर आप मेटावर्स को स्टडी करें तो जो शॉप्स, जो घर शॉपिंग मॉल के पास आने वाले हैं, बड़ी बड़ी मॉल्स के पास, सिनेमा के पास या एयरपोर्ट्स के पास रहते हैं, उनकी वैल्यू हमेशा ऊपर जाने वाली है। तो मेटावर्स में भी यही होने वाला है। तो आपके पास ग्रेट न्यूज़ है कि अभी ऑफर नई स्टार्ट हुई। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब इनिशियल ILO स्टार्ट हो, लैंड ऑफर का आपको मैसेज आए, सबसे पहले बाय कीजिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका वो प्लॉट, अगेन ये वो फाइल है जिसका प्लॉट आपको नहीं पता कि कहाँ निकलने वाला है। तो मैं आपको गुजारिश करूंगा कि इसको बड़े ही तरीके से देखिए और समझिएगा। So I think Mr. Fawad explains it in your local language, but I'm gonna explain it quickly in English again. Why is it so important to get in the initial land offering? Like in every other big major city, like in every other big major project, first come, first serve. Same here, the lands are minted on our own M20 blockchain. And the first people who get into the land will be the ones in the city center, will be the one on major roads, on major areas where all the magic is happening. You can later purchase a land, but like in real life, when something is owned by someone else, you have to move somewhere else. So in the initial land offering, you have the opportunity as a first mover to purchase your land in the city center, and after that you have to play around with the aftermarket prices. And when something is low on demand but very asked in the market, you can imagine what happens with the price. So the cheapest opportunity is to get in the ILO. आई थिंक ये मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया, लेकिन डिटेल में दोबारा थोड़ा सा जो जो चीजें टच अपॉन थी वो मैं करता चलूं। अब इस लैंड ऑफर को आपको मिलेगा कैसे? तो ये जो हमारा ILO जो कि इनिशियल लैंड ऑफर रहने वाला है, वो आपको मिलेगा NFT की शेप में, NFT की शक्ल में। और वो NFT आपकी अपनी M20 ब्लॉकचेन से ऊपर ही होगी। तो आई थिंक ये भी एक आपके पास ये जो ब्लू टिक बोल दें या सर्टिफिकेशन या मेंटल सेटिस्फेक्शन बोल दें इसको, कि हमारा जो घर के कागज हैं, अगर हम अगेन मैं आसान भाषा में बोलूं तो हमारे घर के कागज या हमारे घर की जो रजिस्ट्री है वो हमारी ही ब्लॉकचेन के ऊपर अवेलेबल रहने वाली है। तो इसकी जैसे 10,800 NFTs बनेगी, एक घर की एक NFT होगी,
तो 10,800 NFT मिलने वाली हैं आपको। NFT बेसिकली अगर समझना चाहें तो ये आपके घर की जो रजिस्ट्री है ये आपके पास होगी। और ये रीजन क्यों है कि आप अपना घर पहले ब्लॉग अपने मेटावर्स के ऊपर लें, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो प्लॉट्स, जो घर शॉपिंग मॉल्स के पास, सिनेमाज के पास, बिजी स्ट्रीट्स के पास होंगे, उनकी वैल्यू ऊपर जाएगी, जैसा कि आज के रियल वर्ल्ड में होता है। जो लोग भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स हैं वो मेक श्योर करते हैं कि वो वहां पे अपना प्लॉट लें, वहां पे अपनी प्रॉपर्टी लें जो कि सिटी सेंटर से करीब हो, बड़ी रोड से करीब हो, एयरपोर्ट से करीब हो या स्टेशन से करीब हो, क्योंकि उसकी वैल्यू हमेशा ऊपर जाती है। इसी तरीके से मेटावर्स के अंदर भी यही रूल अप्लाई होने वाला है। Technology is something that we use in our everyday life, and for the people who are interested in the technology, we have in-house development for our metaverse. And the special thing is we use Unreal Engine. For the people who want to know more in detail what it is, go on Google, search on YouTube Unreal Engine, and you will see how difficult it is to use this kind of technology. And why is it so difficult for developers to build a metaverse? The unique thing is everything is based on Web3 and blockchain. So everything that is designed is also backed by the blockchain, backed as an NFT. So you really own it with your transaction ID on the blockchain. In our case, the M20 blockchain. So you have to combine you have to combine entertainment and blockchain together. That's why it is very, very difficult, but we have a great team in-house development, and I think this is the next level and the future of technology, where entertainment and consuming things are based on the blockchain. आई थिंक अगर आप इसको मैं बिल्कुल इसको आसान समझा पाऊं तो वो ये है कि देखिए, हमारे पास सबसे पहले तो जो डेवलपर्स की टीम है वो इन हाउस है। एंड आई थिंक आप समझ सकते हैं कि मेटावर्स डेवलपमेंट की बात करें तो ये एक नेक्स्ट लेवल, एक नेक्स्ट फेज के डेवलपर्स हैं। ये वो लोग हैं जो फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट कर रहे हैं। और अगर हम अपने मेटावर्स की बात करें तो ये 3D वर्जन में आपको मेटावर्स मिलने वाला है, कि अगर जब आप इसको अपने VR ग्लासेस के थ्रू पहनेंगे तो आपको एक रियलिटी, जो कि एक रियल लाइफ में जो काम हो रहा है वो आपको नजर आएगा और आपको फील आएगी कि ये रियल लाइफ में हम रह रहे हैं और रियल लाइफ में ये सब कुछ हमारे इर्द गिर्द हो रहा है। तो इसलिए ये हमारी जो टेक टीम है वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है। और आई थिंक ये तो कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि देखिए, अगर आप एक नॉर्मल वेबसाइट भी बनाते हैं तो आप एक अच्छे डेवलपर को ढूंढते हैं। मैं ये एक नॉर्मल वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। अगर आप ब्लॉकचेन की या मेटावर्स के डेवलपर्स की बात करें तो आप समझ लीजिए कि ये एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट टीम है, जो कि हम लकी हैं, हम ब्लेस्ड हैं, हमारे पास वो डेवलपमेंट टीम है जो इन हाउस ये सारा हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। And what is also possible is to, like in your real life, everyone has their own personality. You can also create your own avatar inside as well. A lot of things will be available from the beginning on, but like in the real life, special designer clothes, special assets, special things you have to purchase exclusively, but the major things will be available from the beginning on. अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं कैसे देता हूं कि आप सभी लोगों ने शायद वीडियो गेम्स खेली होंगी या अपने बच्चों को वीडियो गेम्स खेलते हुए देखा होगा। तो वीडियो गेम्स में जो करेक्टर आपको नजर आते हैं, अगर आप उसको गौर से देखेंगे ना, उसकी बहुत ही रिजेम्बलेंस है रियल लाइफ लोगों के साथ। अगर आप किसी गेम की बात कर लें, किसी इंसान की बात कर लें, जो गेम में आएगा उसकी रिजेम्बलेंस रहती है। इसी तरीके से आप मेटाराइज के अंदर, जो हमारा मेटावर्स के अंदर, आप अपना एवटार बना पाएंगे, आप अपनी ही एक इमेज क्रिएट कर पाएंगे, जिसके अंदर आप उसको अपनी मर्जी के रंग दे पाएंगे, बॉडी शेप दे पाएंगे, कपड़े दे पाएंगे, जो जो भी आप चाहेंगे
वो आपके पास ऑप्शन रहने वाली है। वो अब अपना एक जो है ना वो एक इमेज कार्टून वर्जन में वो क्रिएट कर पाएंगे, जो कि इस पूरे मेटावर्स में आपको चलता हुआ नजर आएगा। आपको इस पूरे मेटावर्स के अंदर मॉल्स के अंदर, अगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर, घरों के अंदर, बिजनेस प्लेसेस के अंदर, ऑफिसेज के अंदर, पॉडकास्ट रूम्स के अंदर, हर जगह पे आप अपने उस एवाटार को देख पाएंगे और लोग आपको, यही आपकी आइडेंटिटी रहने वाली है मेटावर्स के अंदर। तो आई थिंक ये बहुत एक्साइटिंग चीज है। मैं खुद भी एक्साइटेड हूँ इसको लेके। Here are some numbers, what's currently going on in the world. 8 billion people, and 4 billion of them, half of them, are online connected. So you can see over 50% or 50% in this world is not even online somewhere on social media, on different platforms, and 2 billion are in the gaming industry. This is right now, and I will show you what prediction says in 2030. अगर आप दुनिया के अंदर देखेंगे तो इस वक्त 8 बिलियन लोग मौजूद हैं, जिनमें से 4 बिलियन, सिर्फ 50%, सिर्फ आधे लोग ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल फोन है या वो किसी तरीके से इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं। अब उसमें से भी 2 बिलियन लोग ऐसे हैं जो कि गेमिंग वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं। तो अगर हम इसको देखें 2 बिलियन लोगों को, तो ये एक बहुत बड़ी ऑडियंस है। 2 बिलियन लोग बहुत ज्यादा लोग हैं जो गेमिंग वर्ल्ड से हैं। तो अगर हम यही प्रेजेंटेशन जो आज हम मेटावर्स की दे रहे हैं, जो लोग गेम्स खेलते हैं या अगर आपके बच्चे गेम्स खेलते हैं, अगर आप यही प्रेजेंटेशन उनको दिखाएंगे तो शायद उनके लिए ये समझना बड़ा ही आसान हो कंपेयर हमारे समझने के लिए, क्योंकि हमारे लिए ये चीज बहुत नहीं है। लेकिन जो लोग गेमिंग वर्ल्ड से ताल्लुक रखते हैं, जो लोग गेमिंग वर्ल्ड के अंदर खुद इन्वॉल्व हैं, उनके लिए ये सब समझना बड़ा ही आसान रहने वाला है। Predictions and experts says in 2030, 9 billion people will be alive on this planet. 5 billion of them, a billion more, will be connected online somehow through social media and the internet. And the main focus in the metaverse are the 4 billion people in the gaming industry. And for the people who are not in the gaming industry or who are not that related to gaming, if you go inside some games, I'm not talking about the whole industry, some games only make billions in revenue. Or, for example, if you go out and search for the numbers when they are selling a new game, for example, some names, GTA, Call of Duty, FIFA, very known in this world, they all create every year millions and millions, 100 millions, also billions in revenue only by launching a new game. So the main focus, if you think further with Metaverse and focus on 4 billion gamers, I think this is a huge community. Forget about the rest of the world. They can stay wherever they are. I think it is enough to get the gamers on board, and we will have a great community within our metaverse world. अगर हम फ्यूचर की बात करें, आज से 6 साल बाद 2030 के अंदर, तो जो एक्सपर्ट्स हैं दुनिया में वो ये कहते हैं कि दुनिया के अंदर 9 बिलियन लोग वो मौजूद होंगे, जिसमें से 5 बिलियन जो कनेक्ट होंगे सोशल मीडिया के ऊपर। और जो गेमर है, जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो गेमर है वो डबल हो जाएगा अगले 6 सालों में। तो 4 बिलियन लोग ऐसे होंगे जो कनेक्ट रहेंगे इसके ऊपर, गेमिंग के ऊपर। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें, अगर आप जानते हैं कुछ गेम्स के नाम, जिसमें से फीफा है, कॉल ऑफ ड्यूटी है, ये वो गेम्स हैं जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स रेवेन्यू किया अपने अपने प्रोजेक्ट्स के थ्रू, गेम्स के थ्रू। अगर हम थोड़ा डिटेल में जाऊं तो अपने एवाटार्स को सेल करके, अपनी स्किन्स को सेल करके, ठीक है। कुछ मेरे वर्ड्स, कुछ अल्फाज ऐसे होंगे जो आपको समझ नहीं आएंगे, तो बिल्कुल आपने स्ट्रेस नहीं लेनी। आपको बार बार ये समझाया और ट्रेन किया जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं। तो मकसद ये है बात करने का कि 4 लोग जो हमारा एज अ मेटा अराइज जो फोकस है, वो ये 4 बिलियन लोग हैं जो ऑलरेडी
इस इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। आप इमेजिन कीजिए, आज अगर आप सबके पास कोई लोग आए और आपको क्रिप्टो की इंफॉर्मेशन दें, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई हमें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, हम क्रिप्टो में पिछले कई सालों से इन्वॉल्व भी हैं, हम इन्वेस्टर भी हैं और हम पैसे भी कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक्सपीरियंस आ चुका उस इंडस्ट्री के अंदर। इसी तरीके से जब मेटा अराइज के अंदर हम इन लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, तो ये वो लोग हैं जो मेटावर्स के अंदर पिछले कई सालों से ऑलरेडी काम कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, गेम्स डेवलप कर रहे हैं, चीजें बाय कर रहे हैं। और इनके लिए ये नया अडॉप्शन नहीं है, हम सब के लिए मे बी ये नया अडॉप्शन हो, इन 4 बिलियन लोगों के लिए नया अडॉप्शन नहीं है। तो इसलिए हमारा जो फोकस रहने वाला है फेज 1 के अंदर, स्टेप 1 के अंदर, ये वो लोग हैं जिनको हम टारगेट, हमारी टारगेटेड ऑडियंस रहने वाली हैं, जो हमें जल्दी और इजी अंडरस्टैंड करने वाली हैं। तो आई थिंक फ्यूचर जो है मेटावर्स को लेके वो बहुत ही बड़ा है, अभी बिल्कुल ये अर्ली स्टेजेस के ऊपर है। Let's talk more in detail about the future of the Metavers. We will start, as I told you, with the initial land offering. Before that, the Metavers token itself. I will go in detail after this slide to the token itself. But the token and the ILO will be the first things this year that will start. Also, the official web platform release will be in the same time frame. Then the mobile app will be released, asset builder and game builder. This is to give the opportunity to people to build their own thing within the Metaverse. And since we have a big Asian community, India, Pakistan, I was back then in November at the Cricket World Cup. All of you guys go crazy about cricket, so we will host later on the first cricket match in the Metaverse. We will host a crypto conference, but this takes a lot of management and a lot of development. So this will be more for 2025, also fashion shows and different conferences and events. This is the roadmap for the next 12 to 18 months. And as I told you before in the slide, I think a great and bright future is coming for something like the Metaverse and Web3 space. अब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 12 से 18 माह तक? तो ये हमारा क्लियर रोड मैप है आप सबके लिए। इसमें से जो जो स्टेप्स हैं वो हम आपको बताते चलते हैं कि सबसे पहले तो होगा ILO, इनिशियल लैंड ऑफर, जो डिटेल में मैंने आपको समझा दिया पहले। दूसरा, ऑफिशियल वेब प्लेटफॉर्म रिलीज। सबके पास ऑप्शन रहने वाला है कि आप ऑफिशियल वेब जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर भी आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और मोबाइल एप्स, जो कि जो हमारा जो एंटायर फोकस है मेटावर्स के अंदर, मोबाइल ऐप रिलीज ISO और एंड्रॉयड दोनों के अंदर। और एसेट बिल्डिंग रिलीज, उसके साथ साथ गेमिंग बिल्डिंग रिलीज। आप अपनी गेम्स बिल्ड करें, आप अपने एसेट्स बिल्ड करें, आप मोबाइल ऐप्स डेवलप करें, आप वेब ऐप्स डेवलप करें। जो आपको ऑप्शन दी जाएगी कि आप जो जो करना चाहें वो हमारे साथ मिलके इस मेटावर्स के अंदर आप करें। उसी के साथ साथ जो हमारा पहला जो क्रिकेट मैच है मेटावर्स के अंदर, वो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं इंडिया ट्रैवल किया मैंने कुछ मंथ पहले नवंबर के अंदर, और आप सब लोग क्रेजी हैं क्रिकेट के लिए। मैं एक्साइटेड था आपको देख के। मैं वहां पे था जब वर्ल्ड कप हो रहा था, और मैंने देखा कि लोग किस तरीके से एक्साइटेड हैं इंडिया पाकिस्तान को लेके, क्योंकि मेजॉरिटी लोग इंडियन है। तो आप सब एक्साइटेड हैं, तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ये क्रिकेट मैच करवाएं। इसी के साथ साथ अपना जो पहला इंटरनेशनल जो क्रिप्टो कॉन्फ्रेंस है वो हम अपने मेटावर्स के ऊपर करें। इसी के साथ साथ जो हमारा एक और गोल है वो है फैशन शो को लेके मेटाराइज के अंदर। तो ये सारे वो स्टेप्स हैं जो आप आने वाले 12 से 18 माह तक देखेंगे कि कंपनी किस तरीके से ये सारे स्टेप कर रही है। तो आई थिंक ये एक बड़ी अच्छी ग्रेट न्यूज़ है हम सब के लिए, आप सब के लिए, कि कंपनी किस तरीके से इन सब स्टेप्स को कर रही है। Every vehicle, everything is fueled with something. The Metaverse world, the Metaverse is fueled by our
token called Riser token, ladies and gentlemen. This is the official name. The ticker symbol is RIS. The supply is a billion RIS, a billion Riser tokens, and this is the Metaverse utility token based on M20. So don't forget to run everything. You still need your M coins, you still need the M20 blockchain because this is based on our blockchain, but within the Metaverse, within your projects, you need this asset. And great news for you guys. You have the possibility to make a lot of gains on this token. As we explained in the call before, the staking option will be available for this asset. And just imagine everything that we explained before. For everything you need this token. Now imagine how many people and how many businesses or creators need this token, and you have the possibility to make a lot of gains on this asset. तो सबसे पहले तो दोस्तों ये चीज आप सबने समझना ही है कि हमारा बेनिफिट, देखिए हम क्या करते हैं, हम जब भी कोई प्रेजेंटेशन, कोई अपॉर्चुनिटी हमारे सामने रखी जाती है, तो सबसे पहले हमारा यही क्वेश्चन होता है कि हमारा बेनिफिट कहाँ पे है। तो जो आपको पिछले 1 घंटे में प्रेजेंटेशन डिटेल में समझाया गया, उसका मेन मकसद ये था कि हम जो मेटा राइज टोकन लेके आ रहे हैं उसका बेनिफिट क्या रहने वाला है, आपको उसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि मेटा जो हमारा प्रोजेक्ट है, उसका जो नाम ऑफिशियली हम आज अनाउंस कर रहे हैं, उसका नाम है राइजर। ठीक है, राइजर का जो जो टिकर नेम रहने वाला है, जैसे कि बिटकॉइन का BTC, ठीक है, इसी तरीके से एथेरियम का ETH, इसी तरीके से राइजर का है RIS। तो ये एक टिकर नेम है जो हमारा है, और उसी के साथ साथ जो है, जो हमारी टाइप है वो है मेटा राइज यूटिलिटी टोकन। जो टोटल सप्लाई रहने वाली है वो जैसा कि लास्ट कॉल में बताया, वो 1 बिलियन टोकन रहने वाली है जो हमारी सप्लाई है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो आई थिंक ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मेटावर्स समझाने का मकसद ये है कि ये एक कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। क्योंकि देखिए, अगर हम आपको डिटेल में आज ना बताते तो शायद आपके ज़हन में कहीं ना कहीं ये बात रह जाती कि ये मेटा राइज के अंदर ये कर क्या रहे हैं, हमारी कंपनी मेटावर्स के अंदर कर क्या रही है, कौन से प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर रही है, कौन सी प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रही है। तो आई थिंक अगर आप इस वीडियो को, जब भी आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आए, क्योंकि ये लाइव है यूट्यूब पे, तो ये वीडियो आपको लाइव यूट्यूब पे मिलेगी, आप वापस इस वीडियो पे जाएंगे, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि आप मेटावर्स में क्या करने वाले हैं, तो आप उनको ये वीडियो दिखाएंगे कि ये हमारा रोड मैप है, ये हम करने जा रहे हैं, और ये हमारा गोल है जो एज अ कंपनी हमने सेट किया। तो मैं कंग्रेचुलेट करूंगा तमाम राइजर्स को। RIS जो कि हमारा टिकर नेम हमें ऑफिशियली आज मिल चुका। तो आई थिंक फ्यूचर हमारे लिए बड़ा एक अच्छा है, क्योंकि आप देखेंगे फ्यूचर गेन्स, जो फ्यूचर में जो ग्रोथ होने वाली है, वो भी एक बड़ी ही एक्साइटिंग न्यूज है। A thing that I should mention in this slide and through this token is where can you get it in the future? How will it be able to trade this asset? Like with Mcoin, step by step, every exchange where you can purchase and where Mcoin is listed currently and in the future, this token will also be available. So step by step, this will also be listed on all exchanges like Mcoin. इसी तरीके से अगर आपका ये क्वेश्चन है कि आपको राइजर टोकन कहाँ पे मिलेगा आने वाले कुछ मंथ में, जिस तरीके से हमने Mcoin को ग्रो किया, इसी तरीके से आपको राइजर टोकन भी तमाम एक्सचेंजेस पे मिलेगा। जहां जहां आपको Mcoin आज दिख रहा है, वहां वहां आपको राइजर टोकन भी मिलेगा। So let me break it down for you. Token allocation, tokenomics in the Web3 space, we call it tokenomics. 8% will be community rewards for, like we said, cricket games, for different kinds of events where people get
things like affiliation, so community rewards 8%, marketing and partnership 10%. We will explain you in the end which kind of partnerships we are already in with Metavers. Development and operation to run this whole project 12%, founder and the whole team 15%, initial land offering 10%. And the main thing, as we told you in the calls before, VCs is a major topic. VCs went into mCoin. They are also extremely interested into this project, into the Riser token, into Metavers itself. So 20% are reserved for VCs. They are not available for the outside community, not for personal individuals, only for VCs. And 25% will be available for the private sale. So this is the tokenomics of the token. Everything will be visible in the blockchain and verified through third parties. जैसा कि आप सब अपने सामने देख रहे हैं, जो कि टोकनोमिक्स है हमारे प्रोजेक्ट का, ये टोकन एलोकेशन बोल दीजिए, कि ये जो 1 बिलियन टोकन है ये किस तरीके से डिवाइड किए गए और कौन कौन से पार्ट में कितने कितने टोकन मिलेंगे। सबसे पहले तो कम्युनिटी रिवॉर्ड 8%, जो हमारे पास लोग आएंगे, सेलिब्रिटीज आएंगी, हमारे पास जो लोग इसके अंदर आएंगे उनके लिए सबसे पहले तो ये है कि 8% उनको एलोकेट किया जाएगा। इसी के साथ साथ मार्केट और पार्टनरशिप्स, जो कि ऑफ कोर्स आप समझते हैं कि जब हम इसको ग्रो करेंगे तो दूसरी कंपनी के साथ हम पार्टनरशिप्स भी करेंगे। मार्केटिंग के अंदर 10% और इसी के साथ साथ डेवलपमेंट और ऑपरेशन के अंदर 12%। जब आप डेवलपमेंट में जाएंगे आपको ऑफ कोर्स आपको अपना मेटा जो राइज का जो कॉइन रहने वाला है उसके अंदर 12%, और इसी के साथ साथ फाउंडर्स और टीम के लिए जो एलोकेशन है वो 15% है। इसी के साथ जो ILO जो इनिशियल लैंड ऑफर जैसा कि पहले बताया उसके लिए एलोकेशन जो है वो 10% है। और इसी के साथ साथ VC, जो कि जैसा कि आपको हमने पिछली कॉल में बताया कि किस तरीके से mCoin के अंदर VCs आए और VCs ने इसके अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, इसके अंदर भी हमने ऑप्शन रखी, क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी अप्रोच किया और हमें ये इस बात का बिल्कुल इस तरीके से इंफॉर्मेशन है कि जब हम टोकन 2049 में पार्टिसिपेट करेंगे तो जब हम ये प्रोजेक्ट वहां पे प्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास एक लंबी लिस्ट आएगी VCs की, जो कि इसके अंदर अर्ली बर्ड्स या जो अर्ली इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो उसके लिए एक हमने परसेंटेज एलोकेट कर दी 20%, और इसी के साथ साथ जो प्राइवेट सेल है वो है 25%। तो इस तरीके से इसको प्रॉपर परसेंटेज के ऊपर डिवाइड किया गया पूरे प्रोजेक्ट को। Token utility, I told you before, the fuel to run this whole thing, the fuel for you guys to purchase assets, to purchase property will be the token itself, the Riser token. So the primary currency in the metaverse will be Riser token. Imagine like in real life, in Europe, we use euros. So if I want to buy an apartment, a property, or if I just want to buy clothes, I have to pay in euros. Same here in Riser token. So this is the main utility and functionality of this token. आई थिंक ये आप सभी के लिए समझना आई थिंक सबसे ज्यादा आसान रहने वाला है कि हम इस कॉइन को, मेटावर्स के जो कॉइन है, हम इसको किस तरीके से यूज कर पाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, हम जो भी इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर यूटिलिटी रहने वाली है, जैसा जैसा भी अगर आप अपना प्लॉट लेके रेंट करेंगे, अगर आप अपनी कोई प्रोडक्ट यहाँ से बाय करेंगे, तो उसके अंदर जो इसका नेटिव कॉइन जो कि राइजर कॉइन है वो आप इसके अंदर यूज कर पाएंगे। Community rewards, as I explained also before, content creator rewards like incentives for high quality virtual assets. And the thing is, just imagine you have seen some posts or some articles about influencers on Facebook, on Instagram, on YouTube, how they earn money. Same will be here, same possibilities in our metaverse. So if you provide high quality content, if you provide
good content creation, you will be able to get rewarded. And the referral program, so earn Riser tokens by inviting new people, same like everywhere else in the world. Get someone into this opportunity, get someone into a business, or share your link from different websites and platforms, and you will get rewards. These are the two major community rewards that we will offer, and many more possibilities in the future. अच्छा, इसके साथ साथ जो आपके पास सबसे बड़ी ऑप्शन रहने वाली है वो ये है कि आप इसके अंदर अगर कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप इसके अंदर से बेनिफिट उठा सकते हैं। आप इसके अंदर से इंसेंटिव जो है, अगर आप कोई भी काम करते हैं इस कम्युनिटी के लिए, तो जैसा कि हमने एक परसेंटेज रखी कम्युनिटी के लिए, आप उस कम्युनिटी से भी फायदा उठा सकते हैं। तो आई थिंक ये एक बड़ा ही अच्छा है। हमारे पास रेफरल प्रोग्राम भी है RIS के नाम पे, जो कि इसका नेटिव कॉइन है। इसके ऊपर भी ये ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि हम इसको अगर रेफर भी करेंगे तो हमें इसका बेनिफिट भी आएगा। तो जो कम्युनिटी के लिए लोकेशन सेपरेट की गई है, इसके अंदर भी हमें बहुत सारा बेनिफिट आने वाला है। Partners, I'm very, very proud to tell you and to announce here live to you. Before even going live with the whole project, we connected with big partners out there, a lot of Web2, a lot of real life businesses wanted to jump on Web3, on Metaverse, and I can proudly present you some of our partners from the beginning on. Frank Miller, we have the watches. You saw it. For the people who didn't saw the watch for now, check our social media channels. Frank Miller will have their own store inside the Metaverse. You can go inside, check out the watches, also the M20 watch. For example, some major brands from UK, from London, some designer shops. We have eSquare Legal, a legal team where you can interact with lawyers and a legal team that can advise you, give you consulting. And a major thing, H&L Healthcare Locums from London, from UK, a big supplier in medical, backed with the UK government. So I'm very, very proud to have something like this on board. So a lot of international brands, a lot of first movers that went from the typical and traditional Web2 business, offline business, and jumped directly into the next step called Web3 and Metaverse. You're muted, Mr. Fawad. इसी तरीके से अगर आप ये देखें तो आई थिंक ये बहुत ही बड़ी एक प्राउड मोमेंट है कि अगर आप ये सारी ब्रांड्स को देखें तो ये वो ब्रांड्स हैं जो ऑलरेडी हमारे साथ आ चुकी हैं हमारे मेटावर्स के अंदर। और आप इन सब ब्रांड्स को देखेंगे हमारे मेटावर्स के अंदर। कुछ ब्रांड्स आपके ऑलरेडी रिनाउंड ब्रांड्स हैं जिनको आप जानते हैं, और कुछ ब्रांड ऐसी हैं जिनको आप नहीं जानते। तो जैसा कि आपने देखा कि फ्रैंक मुलर आने वाले टाइम में हमारे मेटावर्स में होगी। इसी तरीके से बड़े ब्रांड जो कि क्लोथिंग ब्रांड हैं, कुछ लीगल ब्रांड हैं, कुछ स्वीट्स ब्रांड हैं। तो ये सब वो हैं जो कि इनिशियल स्टेज पे, मैं इसको बोलूंगा कि ये अभी प्री लॉन्च फेज भी नहीं है। अभी प्री लॉन्च फेज तो हमारा जो टोकन 2049 है उसके बाद स्टार्ट होगा, जो प्री लॉन्च फेज आने वाला है। ये प्री लॉन्च से भी प्री लॉन्च है, ये शुरू से भी शुरू है कि ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी एक्साइटेड हैं हमारे प्लेटफॉर्म को लेके, हमारे विजन को लेके। तो उन्होंने ऑलरेडी हमारे साथ जो है ना जो ज्वाइन किए, हाथ में लाया और हम इसको लेके चले। लेकिन इसी तरीके से आप बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म देखेंगे जो हमारे मेटावर्स पे आएंगे आने वाले कुछ मंथ्स में। A lot of information was shared in this Zoom call. I know it is overwhelming. I think for the people who really understand the bigger vision, the bigger picture,
They are excited. Our whole team is excited. The developers love working on this project. And you can see we are developing all the time. If we have some hiccups, if we have some kind of difficulties, it is because we are developing all the time behind the scenes. The team is not stopping because the vision is for the long term. The vision is to get on this marathon. The life is a marathon, it's not a sprint. Same here in this business. So Metaverse is something for the next 10, 20 years. It is not a hype. It is not something that will come and go fast. It is something for the long term. And I'm very, very proud that we made a major decision to go in this direction, to be a part of this. And I can guarantee you in the future, you will hear a lot from outside media about us. I can guarantee you, you will see us in different Web3 events. You will see big partners in the metaverse. You will see big partners with us on board, VCs, as I told you. And again, last words, thank you so much for joining us today. Be part of Token 2049 in Dubai. There you can see and have information even more in detail. You can meet the team, you can meet the development team, you can meet the management team in person. You can also see which kind of impact M20 already has in the Web3 space. As a Platinum partner, I'm very, very proud to be there. And thank you very much. See you in 2 weeks and have a good evening. थैंक यू सो मच। अच्छा, अब जैसा कि आप सबके साथ आज बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर की गई, तो सम टाइम जब आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो शायद कहीं ना कहीं आपके लिए ये आपको समझ ना आ पाई हो, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो, तो ये कंप्लीटली नॉर्मल है। तो बिल्कुल आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन समझ नहीं आई। इसके लिए जो हमारे ट्रेनर्स हैं, मिस्टर अनुराग गेरा जी, मिस्टर साजवान जी, और इनके साथ साथ जो बाकी स्पार्टन लीडर्स हैं और जो दूसरे लीडर्स हैं, ये आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन डिलीवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आएगा। आज की कॉल इंपॉर्टेंट और ज़रूरी इसलिए थी कि अब हम बिल्कुल 2 दिन अवे हैं, 2 दिन हमारे हमारे दरमियान में है कि जब हम इसको पहले फेज में लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इसलिए आपको पूरी इंफॉर्मेशन, आपके सामने एक पूरी पिक्चर क्रिएट करना बहुत ही ज़रूरी थी, ताकि आपको एक विजन दिया जाए और एक आइडिया दिया जाए कि हम इस पूरे मेटावर्स को किस तरीके से, क्या हम देख रहे हैं। हमने आपको कुछ दिखाना शेयर किया, कुछ दिखाया आपको, और आई थिंक कि बिल्कुल ये तो अभी अगर 50% में मैं बोलूँ तो कम है, ये तो अभी 50% से भी कम था जो आपको दिखाया गया। अगर बैकएंड पे देखें तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट चल रहा है, और यही रीजन है कि सम टाइम आपकी जो कंप्लेंट्स हैं, जो आपकी रिक्वेस्ट हैं, उनमें डिले आ सकता है, उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो सकता है। लेकिन हम बिल्कुल इस चीज से जो है हमें पता है कि आप लोग डेस्परेट हैं इस प्रोजेक्ट को लेके, होल इंडस्ट्री को लेके, और इसको स्टार्ट करने का वेट नहीं कर रहे। तो इसलिए मिस्टर दनीश ने कहा, मैं शुक्रिया अदा करता हूं आप सबका कि आपने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया और हमारे विजन को अपना विजन बनाया। जिस तरीके से हमने एम कॉइन के अंदर इतना बड़ा काम किया, ये तो कुछ भी नहीं था। अब जो हम करने जा रहे हैं, ये हम 100 टाइम बेटर, 100 गुना बड़ा काम करेंगे। और वो क्यों कर पाएंगे? क्योंकि अब हमारा विजन क्लियर है। अब हमारा जो जो नेटिव कॉइन, जो कि हमारा एम कॉइन है, हम सबको ये पता है कि वो कॉइन अब एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बन चुका, क्योंकि हमारे जो मेन इकोसिस्टम की जो मेन ईंट है, जो मेन जो कहते हैं जो पिलर है, वो एम कॉइन है। तो ये तो आप सब समझ लीजिए, जो हमारे प्रोजेक्ट का जो मेन जो पिलर है, या इस गाड़ी का जो मेन पहिया है, वो तो एम कॉइन है, और हमेशा एम कॉइन ही रहने वाला है। लेकिन अगर हम मेटावर्स की बात करें तो हमारे पास मेटाराइज का कॉइन भी आ गया। इसी के साथ इसकी डेवलपमेंट आज आपको डिटेल में बताई गई कि किस तरीके से ये डेवलपमेंट चल रही है, और आप इससे किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। और इसी के साथ आपको प्लेटफॉर्म भी दिया गया। आज से 2 दिन बाद, आज से सिर्फ 2 दिन बाद इसकी सेल भी ओपन होगी, ताकि आप इसको आएंगे, आप पार्टिसिपेट करेंगे और मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएंगे। सो थैंक यू सो मच मिस्टर दिनेश वंस अगेन।
I do really appreciate your time and your effort. So we really look forward to do this project. We cannot wait for 8th of April. I think is going to be amazing date. We all looking forward to hold the first tokens in our hands. So thank you so much. I do really appreciate your time and your effort. Thank you, sir. And I will see you in token 2049. Thank you, sir. Now, अब हम बुलाएंगे एक और हमारी जो टॉप लीडर हैं, हमारे जो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं, आप सभी उनको जानते भी हैं, आपकी मुलाकात भी हो चुकी है, तो किसी तारुफ की मोहताज तो नहीं है ये, आप सब इनको जानते हैं, आप इनसे प्यार भी करते हैं, इनको लाइक भी करते हैं, तो डिले के बगैर मैं इनको इनवाइट करूंगा कॉल के ऊपर. Now I'm going to invite someone who is a lovable. Everyone loves her around our whole company. She's amazing, amazing, lovely person, as well as very professional business lady. And I think we always get to learn from her. And I really wanna hear what you got for us. I would request if you give me chance to speak in between so I can translate. That will be brilliant. So without further delay, ladies and gentlemen, help me welcome our business development manager, Miss Sadie Raful. Please, over to you. Thank you, Mr. Fawad. What an amazing call so far, and I will leave some gaps for you to translate what I am saying. But I first want to say thank you to everyone for being on this call from France, from Europe. I know Miss Alina's expanding the European market and she's doing an absolutely phenomenal job. And for our amazing community in India, namaste. I miss you guys. I can't wait to see you all in 10 days in Dubai at token 2049. I mean, for the last 8 months, we've been just smashing out every single country and expanding in every single country we've landed in from the corporate team to the networkers on the bottom, growing grassroots level. We see it all. We can see every single thing. We appreciate you guys and we love you guys. So I just wanted to start the call by saying this. First and foremost, Mr. Denise, thank you so much for sharing our new Metavers. This is so exciting. I know the team's been building this for a very, very long time, and it takes a very, very long time to build something sustainable like this. And because we are a sustainable project, it took some time, but we're here today and we're excited for all of that's coming. Secondly, I would like to say, I would like to give it back just to Mr. Fawad to translate, and then I'll introduce something that's even more exciting. Thank you so much. So, उन्होंने वेलकम किया हम सब का मिस सेडी ने, और वो बहुत एक्साइटेड हैं ये पूरे प्रोजेक्ट को लेके, और जिस तरीके से वो कह रही है कि मुझे पता है कि किस तरीके से ये टीम पिछले 1.5 साल से इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रही है दिन रात, और आज फाइनली हमारे पास एक फुल शेप में वो चीज़ तैयार है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं. और इसी के साथ वो बहुत एक्साइटेड हैं आप सबको मिलने के लिए. टोकन 2049 जो कि दुबई में आज से कुछ ही दिन हमारे से अवे है, 10 से 15 दिन के बाद हम उस इवेंट में सब एक दूसरे से मिलेंगे. तो जो लोग भी आ रहे हैं वो उनसे मिलेंगी, और जो लोग उनकी आवाज़ सुन रहे हैं वो सबको कह रही हैं कि मैं हाय बोलती हूँ और मैं सबको मिस कर रही हूँ. आप सबके साथ हमारा अच्छा टाइम गुजरा इंडिया के अंदर. So the second amazing thing that we're going to hear today is not just about Metavers. It's not just about the digital world, because behind the digital world, there's a physical world. And last year in India, we had so many questions that were asked to myself. Where is our office? Where is our office? Where is our office? So we took that information and we took it back to the corporate team. And it's officially now that we have our office, our new office in Dubai, in Business Bay. It's just final touches, final renovations. It's official, it's happened. I know we had this conversation last year in India with the Indian community, but I'm so excited because we've worked so hard for this. I mean, we had our co-founders and our CEO in Dubai at the start of the year working behind the scenes to bring this to life and bring this to reality. So this is really, really important, because behind every digital asset and digital Web3 project, yes, we can work from our laptops anywhere in the world, but there's a team that will be up and running and building this project in the UAE space in Dubai.
जैसा कि आप सभी को पता है कि मेटावर्स के ऊपर तो हमने बहुत बात कर ली, लेकिन अब हम रियलिटी के ऊपर बात करेंगे और फिजिकल के ऊपर बात करेंगे, फिजिकल एग्जिस्टेंस के ऊपर बात करेंगे। तो जब मैं इंडिया में ट्रैवल कर रही थी पिछले साल, बहुत सारे लोगों ने मेरे सामने एक क्वेश्चन रखा कि आपका ऑफिस कहाँ है। और मैंने सबसे प्रॉमिस किया कि हम जब वापस जाएंगे हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और आपको आने वाले चंद माह में गुड न्यूज़ देंगे। तो आज उन सब के लिए मेरा मैसेज है कि आप सब के लिए गुड न्यूज़ ये है कि जब आप टोकन 2049 में आएंगे, आपके पास ऑफिशियल ऑफिस होगा जो कि बिजनेस बे दुबई के अंदर है, और आप उसमें आएंगे और आप हम सब से मिलेंगे। और इसके ऊपर हम प्लान कर रहे हैं हम किस तरीके से करेंगे। ऑफिस की रेनोवेशन जारी है, उसके अंदर कुछ जो टचेस हम दे रहे हैं अपने स्टाइल के वो उसको देंगे, ताकि जब आप आए आपको एक फ्रेश लुक मिले, एक अच्छा ऑफिस मिले जो कि आपका ऑफिस हो, और आप उसमें आके अपना आप देख सकें, आप लोगों से मिल सकें, आप कॉर्पोरेट टीम से मिल सकें और हम मीटिंग कर सकें। और आई थिंक किसी भी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट की यही एक निशानी है, यही एक साइन है कि जब आप उनको कोई टास्क देते हैं तो वो उससे बेहतर करके लेके आते हैं। चाहे वो फिर मेटावर्स हो, चाहे फिर वो इकोसिस्टम हो, चाहे फिर वो एम कॉइन हो, मेटाराइज कॉइन हो, या इवन ऑफिस ही क्यों ना हो। तो आई थिंक ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए कि ऑफिशियली हमारे पास ऑफिस दुबई में अवेलेबल है। Thank you, Mr. Fuad. The final thing I want to leave everyone with is two things. One is we've gone through the Web3 project, we've built our Web3 project, we have amazing products a part of our project and amazing companies that are branded globally with longevity a part of our project. We have our Metavers, which is launched. We've launched our NFT. We've sold our NFT. We've launched our watches. We've sold our watches. We've launched a MasterCard. And when I say we've launched, I see our project because I look at other projects and I research other projects, and then I see what we're doing and where we are. We're actually at the forefront of building what we are building. Sorry, I don't. One moment. Sorry, so we're at the forefront of building what we are building, and what we've built in Mether, M20, Metarise is actually incredible because it just shows how sustainable our project is, which is what I was saying at the start of the call. And the reason I say this to you is because if you had any skeptical thoughts about building the project this far up until this point, this shows that we are not going anywhere. We have our own real life office. We have our own virtual office. We're partners, platinum partners in a Token 2049 summit, which is one of the biggest summits in the world. So if you haven't already registered, Dubai has free visas, I know, and has released something new just for the Indian community. There's literally no reason as to why you can't attend Token 209. Whatever you have to do, if it's one thing I can tell you, you have to find a way to attend this event. I'm traveling over 14 hours one way to attend this event for our team. So you have to be there, and it's an absolute must for you to be there, for you to grow and understand the whole Web3 industry as a whole. Thank you so much. I think that was quite an information to share. तो मैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी जो पोजीशन है वो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है, और मेरी जॉब ये है कि मैं दूसरी कंपनीज को जब मैं ओवरलुक करती हूँ, जब दूसरी कंपनीज को देखती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये बड़ी ही एक खुशखबरी की बात है और एक्साइटिंग न्यूज़ है कि हम जो डेवलप कर रहे हैं वो इस टाइम पे मार्केट में कोई और कंपनी नहीं कर रही। अगर हम अपने इकोसिस्टम की बात करें तो हमारे इकोसिस्टम में जितनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो वो एक ये साइन है आप सब के लिए, और ये मैसेज है आप सब के लिए, आप सब एम कॉइन होल्डर्स के लिए, सब मीथर कम्युनिटी के लिए, कि आपका प्रोजेक्ट एक सस्टेनेबल, एक रहने वाला प्रोजेक्ट है जो कि लंबे समय तक रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रोजेक्ट की ग्रोथ को देखें, प्रोजेक्ट जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और कंसिस्टेंट ग्रो हो रहा है, आप हर मंथ में इसको देख रहे हैं कि बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट्स आ रही हैं, बेहतर से बेहतर ग्रोथ हो रही है प्रोजेक्ट की। तो ये साइन है आप सबके लिए कि ये प्रोजेक्ट एक लंबे समय तक चलेगा।
तो आई थिंक यही सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है नेटवर्किंग के अंदर, एमएलएम के अंदर, कि ये प्रोजेक्ट कब तक चलेगा। तो आई थिंक ये तो क्वेश्चन आप सबका आंसर हो गया, क्योंकि अब जिस तरीके से आप सब लोग दुबई आएंगे, आपके साथ कुछ बातें वहां पे शेयर की जाएंगी, आप अपने प्रोजेक्ट्स को लेके, मेटावर्स को लेके, उसी के साथ हमारा जो एम कार्ड है जो ऑलरेडी आप सभी को मिलने वाला है। तो ये लोन एक ऐसी प्रोडक्ट है जो बहुत सारी कंपनीज नहीं कर पाती, लेकिन आपकी कंपनी ने ये वो काम कर दिया। इसी तरीके के साथ फ्यूचर के अंदर आप बहुत सारी अदर प्रोजेक्ट्स हमारे प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, और आई थिंक ये एक साइन है आप सबके लिए कि ये वो प्रोजेक्ट है जो एक बहुत ही लंबे समय तक चलेगा, आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल तक। और ये वो कंपनी है जिसको आप फाइनली कह सकते हैं कि मैं अब अपने घर में हूं, मैं अपनी कंपनी में हूं। Thank you so much, Mr. Fuad. The last thing I want to leave you on is whatever it takes to take where you are to the next level, do it. That's all I can say, because if you're stagnating where you are, whether it's in building, the affiliate side of Meta, or it's, you're questioning why the token isn't moving or why it's not going up just at this moment, don't question, just build, because the whole Web3 ecosystem is created in a way where the project is going to be sustainable and growing at a slower rate, at a slower pace, but a more sustainable pace, so it's significant for now and the future. Mr. Fawad, I'd like to leave the call on this, because I know everyone's time is important. To everyone who's celebrating Ramadan, Eid Kareem, Eid Mubarak, sorry, at the end of this week. And everyone that celebrated Easter, happy Easter. And we'll see you all in the next few weeks. Goodbye for now. Thank you so much, Saidi. As always, you've been really, really amazing. The energy, I just love it. And thank you so much for your time. I will translate. तो लास्ट मैसेज जो हम मिस सेडी ने हमें दिया, कि अगर मैं ये मैसेज आपको दे सकती हूँ कि आज आपने ये फैसला कर लीजिए अपने लिए कि ये प्रोजेक्ट तो एक लंबे समय के लिए चलेगा। क्वेश्चन ये रहने वाला है कि आप कितने लंबे समय तक इस प्रोजेक्ट के साथ चलेंगे, क्योंकि हमने ये देखा कि मार्केट में लोग आएंगे और लोग जाएंगे, लेकिन ये वो प्रोजेक्ट है, अगर आप 5 साल बाद भी आप आएंगे इस कंपनी में, तो ये कंपनी खड़ी रहने वाली है। ये कंपनी का जो इकोसिस्टम बन चुका है आज, ये आने वाले 10 साल में भी आपको यहाँ पे ही नजर आएगी। क्यों? क्योंकि एक ऐसी कंपनी जो कि डेवलपमेंट में एक अपनी मिसाल है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे नेटवर्किंग में पिछले 15 साल से मैं नेटवर्किंग कर रहा हूं, मेरे सामने ऐसी कोई कंपनी नहीं आई कि जिसने कंसिस्टेंटली ग्रोथ की हो और एवरी स्टेप के ऊपर ग्रोथ की हो। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है, ना सिर्फ कॉर्पोरेट टीम की, इसके साथ साथ आप सबकी। क्योंकि अगर आज ये प्रोजेक्ट एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बना तो इसमें आप सबका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो तमाम लोग जिन्होंने शुरू में मीथर को, एम कॉइन को ज्वाइन किया और ट्रस्ट किया हम सब के ऊपर, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और आपको थैंक यू बोलूंगा कि आपने उस वक्त ट्रस्ट किया हमारे ऊपर जब आपके पास कोई रीजन नहीं थी ट्रस्ट करने की। लेकिन आज आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा मेटाराइज के ऊपर, क्योंकि जो प्रोजेक्ट, जो काम आपने 4 साल पहले, 3 साल पहले हमारे लिए किया, आज हम वो आपके लिए कर रहे हैं। आज वो ही प्लेटफॉर्म था जो आपको उस वक्त डर लग रहा था, आपके दोस्त रिश्तेदार बोल रहे थे कि ना करो, ये कंपनी का पता नहीं है कौन लोग हैं, ये बंद हो जाएगी, इसमें ना पैसा लगाओ। लेकिन आज अगर आप देखें कि 4 साल बाद वही लोग, वही कंपनी, वही इकोसिस्टम ग्रो होते 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 एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया कि जहां इंटरनेशनल ब्रांड टोकन 2049 प्लेटिनियम मेंबर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपका ऑफिस बिजनेस बे में है, आपके पास एम कार्ड है, आपके पास एम कॉइन है, आपके पास ट्रेड बिट एक्सचेंज है, आपके पास एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। तो आप खुद अपना एनालिसिस कीजिए, मार्केट में ऐसी कितनी कंपनीज हैं जो ये सारा काम कर रही हैं। तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आपको एक कंपनी भी नजर नहीं आएगी। कंपनीज आती हैं, 2-3 साल के लिए एक्साइटिंग न्यूज देती हैं, इसी के साथ बंद हो जाती हैं। हमारी वो वाहिद कंपनी है इस वक्त नेटवर्क के अंदर कि जो पिछले 2 बेयर मार्केट बर्दाश्त कर चुकी और फिर भी कंपनी में सिस्टम में अलाइव है। तो आई थिंक ये एक सक्सेस है कलेक्टिवली हम सब की, आपकी एज अ नेटवर्कर, कॉर्पोरेट की मिला के एक सक्सेस है
जिसकी वजह से हम ना सिर्फ मार्केट में एक रिकग्नाइज्ड प्रोजेक्ट बने, बल्कि इसको हम टाइम टू टाइम ग्रो भी कर रहे हैं, और आपको ग्रोथ नजर आ रही है। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इस कॉल के बाद कुछ लोग होंगे, क्योंकि मैं अगर आपको एक स्टोरी सुनाऊं तो मैं इसी पे इख्तिताम करूंगा, इसी पे अपना फिनिश करूंगा, आपकी अपनी भी, कि मैं पहली दफा इवेंट पे गया, नेटवर्किंग के इवेंट पे गया, तो उस वक्त मेरे पास सक्सेस बिल्कुल नहीं थी। तो मैं जिस बंदे के पास गया उसको मैंने बोला कि मैंने तुम्हारे जैसा बनना है, मैं क्या करूं कि मैं तुम जैसा बन जाऊं। तो उसने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे एक कमरे में ले गया। उस कमरे के अंदर 15,000 लोग बैठे हुए थे, वो बहुत बड़ा अरीना था, उसके अंदर 15,000 लोग थे। उसने मुझे बोला, ये देख लो, ये सब लोग जो बैठे हैं आज। मैंने देखा सब लोग नारे मार रहे थे, सब एक्साइटेड थे, बहुत ज्यादा शोर कर रहे थे प्रोजेक्ट के बारे में। उसने मुझे कहा कि नेक्स्ट इवेंट पे जब तुम आओगे, इनमें से 97% लोग दोबारा नहीं आएंगे, ये घर जाके भूल जाएंगे, और जो 3% आएंगे वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। तुम ये मेक श्योर करना तुम उन 3% में हो। वो बात मेरे दिमाग में स्टक हो गई। जब अगला इवेंट आया 1 साल बाद, मैं उसमें गया, वो बिल्कुल ठीक था। उस इवेंट पे सिर्फ मेरे तो कोई जाने वाला था ही नहीं, बिल्कुल सब नए चेहरे थे। तो मैं रुका रहा। उसकी रीजन बनी कि मैं अपने जो प्रीवियस प्रोजेक्ट था उसमें बहुत बड़ी सक्सेस पाई। तो आज मेरा मैसेज भी आप सबके लिए यही रहने वाला है। आप जिस भी पोजीशन पे हैं, अगर आप स्टेप अप नहीं करेंगे, अगर आप ऑनरशिप, लीडरशिप नहीं लेंगे, तो जो नीचे वाले लोग हैं वो आपको रिप्लेस करेंगे। और यही हुआ मेरे साथ, और यही इंडस्ट्री है। इसलिए एज अ कलेक्टिव लीडरशिप, हम वो लोग हैं, आप सभी लोग और हम वो लोग हैं जिन्होंने मीथर की बुनियाद रखी, जिन्होंने मीथर को बिल्ड किया, जिन्होंने मीथर को अपना खून और पसीना दिया। अब कंपनी ने हमें ऑप्शन दी कि अब आइए, आप इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनिए और मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए। आपका एम कॉइन, जो कि ट्रेडिशनल कॉइन बन चुका, जिसमें बड़े वीसीज आ चुके, वो एक सस्टेनेबल प्लेटफॉर्म बन चुका, जो आपकी मेहनत थी 4 साल की, वो सक्सेसफुल हो चुकी। अब हमारे पास मेटा राइज की ऑप्शन आ गई, जिसमें हम काम करेंगे और इसको एक डिफरेंट लेवल पर जाएंगे। ना सिर्फ हम, बल्कि हमारे पूरे लोग भी वो पैसा यहां से कमाएंगे। जो लोगों ने मिस किया शुरू का स्टार्ट, आज उनके पास ऑप्शन है कि वो ये स्टार्ट कर पाएंगे। तो आई थिंक ये कॉल ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो मैं इसी मैसेज पे आप सबको, आपसे इजाजत चाहूंगा कि आज से 2 दिन बाद, अब आई थिंक 48 घंटे से भी कम का समय रह गया, आपके पास वो ही ऑप्शन है जो 3.5 साल 4 साल पहले सभी स्पार्टन्स के पास थी। सभी वो लोग, अब मैं क्या क्या नाम लूं आपके सामने, अगर मैं नाम लूं तो बहुत लंबी लिस्ट है। अब इसमें बहुत सारे लोग आएंगे कि मैं अगर किसी का नाम मिस होगा तो वो लोग माइंड करेंगे। तो सभी स्पार्टन्स का मैं नाम लेता हूं कि ये वो लोग हैं जो हमारे शुरू के ट्रस्टीज लोग थे, जिन्होंने ट्रस्ट किया प्रोजेक्ट पे, कंपनी पे, मिस्टर ताहिर हुसैन के ऊपर। अगर मैं नाम लूं तो ताहिर हुसैन का नाम सबसे लिस्ट के ऊपर है, जिसने हम पे ट्रस्ट किया, जिसने कॉर्पोरेट पे ट्रस्ट किया, और उनके बाद उनकी टीम ने ट्रस्ट किया। इस वजह से ही कि अगर आज देखें तो मिस्टर ताहिर हुसैन और उनकी टीम ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया, क्योंकि उन्होंने उस वक्त स्टार्ट किया जब टाइमिंग बिल्कुल ठीक थी। लेकिन आज ये ग्राउंड ओपन है सबके लिए, चाहे आप फ्रांस में हैं, चाहे आप यूके में हैं, चाहे आप इंडिया में हैं, चाहे पाकिस्तान में हैं, चाहे आप अफगानिस्तान में हैं, दुनिया, चाहे आप अफ्रीका में हैं, आपके पास सेम प्लेटफॉर्म है। वही टाइम जो आज से आपने गुजार दिया, दोबारा आपको मिल रहा है। अब आप आइए, हम मिलके ना सिर्फ मेटा राइज को सक्सेसफुल करेंगे, बल्कि एम कॉइन को भी। और हम एक हिस्ट्री लिखने जाएंगे कि कुछ लोग ऐसे थे सर फिरे, जिन्होंने एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट बिल्ड कर दिया जो कि ना सिर्फ इंडिया बल्कि दुनिया में भी अपनी मिसाल आप रहा। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा, सभी लीडर्स के साथ। मिस्टर ताहिर हुसैन कॉल पे हैं, और सभी स्पार्टन आप कॉल के ऊपर हैं। मिस्टर वकास कॉल पे हैं, सेडी, thank you so much for being on the call. Mr. Denise, thank you so much for being on the call. Miss Elena, thank you. I really, really thanks to you guys for being on the call with us. And I will finish in one note, which is our famous note. Guys, we are one family. We are one big family. हम एक बहुत बड़ी फैमिली हैं, और इसीलिए हमारी फैमिली के किसी भी सदस्य को कोई प्रॉब्लम होगी तो सब इफेक्ट होंगे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबको साथ लेके चलें, और हम समझते हैं सब साथ नहीं चल पाएंगे, कुछ लोग नहीं चल पाएंगे, तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जितनों को हम साथ लेके चलें,
कोशिश ये रहेगी कि सब मिल के चलें, वो अगर इत्तेफाक से चलेंगे तो लंबा चलेंगे. So thank you so much guys. We are one, we are Mether. Assalamu alaikum, namaste, sat sri akal, and have a great night. Thank you so much, Elena, once again. Sadie, Mr. Denise, thank you so much. Have a great evening, guys. Good night, Shabahar, and enjoy your night. Thank you so much. Eid Mubarak to everyone who's celebrating Eid. Happy Easter to those who celebrated Happy Easter. I love you all, and I will see you in Dubai.